Court, worked with the judges at the Punjab Judicial Academy. Subsequently, the same project model was replicated in Sindh, where we were able to closely work with Shahid Saab and his colleagues from the Sindh Judicial Academy. It was only because of the enormous support they have extended, we were able to do some work in Sindh, which means the establishment of court annexed mediation centers in Sindh, working with the bodies of lawyers, working with Honorable Sindh High Court, working with judiciary. I think it has been a very good start to, in terms of not only promoting the ADR, but also kickstarting the physical implementation part of it. Other than this, we also have this technical assistance program ongoing with the Law and Justice Commission of Pakistan. We have recently extended the scope of work to the Federal Board of Revenue, where they have this formal ADRC's arrangement to resolve the taxpayer disputes. We are looking into the avenues to work with police and the law enforcement agencies, as an attempt to introduce ADR there. One of the fundamental work we have done under this project is the training of lawyers and the sensitization of the young lawyers, especially. So we have been working with some law schools where we introduce the ADR curriculum. We've been training students there who, subsequent to their graduation, they have undertaken some very good research projects. It's ongoing, in fact, and now I think it's the high time that we engage with lawyers, try to advocate for ADR with them and try to turn them into the proponents of ADR. Therefore, we are talking to each other today. I will be available for the rest of this session. If you have any more question about the project, about the work we do, please feel free to send it to me or send it to Mehak, and I will try my best to respond. Thank you. Thank you so much, Zishan. Now, according to the agenda, I will be giving a brief history of the ADR mechanisms and efforts in Pakistan. And after that, we will be talking to our expert panelists and we will be taking their expert views. I will be bilingual for this. Now, starting with the efforts of ADR in Pakistan. Domestically, there have been inconsistent efforts made to introduce ADR, and specifically mediation at an individual, organizational, provincial, and federal level. No holistic, strategic, structured approach has been taken to introduce mediation as a part of our legal, social, political, or legal educational system as a whole. पाकिस्तान में 2 मिलियन से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, जिसकी वजह से इमेंस प्रेशर पड़ता है आपके लीगल सिस्टम की वजह से के ऊपर. उससे आपकी जो इकोनॉमी है वो उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट होते हैं, आपका डाउट इन द रूल ऑफ लॉ होता है और इनएफिशिएंट गवर्नेंस होती है. लॉन्ग डिलेज की वजह से आपके इम्पैक्ट पड़ता है ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इवेंचुअली आपकी जो ट्रेड है वो इरोड करती है. But in general terms, ADR क्या है? ADR एक collective description है of methods including negotiation, mediation, early neutral evaluation, expert determination, and arbitration. Now, these processes are supposed to be quick and efficient, and they can be carried out. जिस तरह हमने COVID-19 के टाइम पे देखा है कि online globally ADR has been practiced much more efficiently when the court system has failed because COVID की वजह से वो बंद था. Now, over the decades, in a piecemeal fashion, the Pakistan government has tried introducing ADR and they have tried promoting it. However, despite traditional informal ADR systems being prevalent in tribal areas, jirgas और पंचायत के form में, एक formal ADR system हमारा establish नहीं हो सका. In 1908, when the Code of Civil Procedure was enacted in British India, the provisions of arbitration were a part of this enactment. In 1940, and keeping in mind the importance of arbitration, the Arbitration Act 1940 was enacted. So, Pakistan ने जो आपके pre-partition laws हैं, वो अपने statute books में adopt कर दिए.
After independence in 1947, the evolution of ADR in a structured manner did not materialize. फिर भी आपकी जो प्री कॉलोनियल लेजिस्लेशन है वो स्मॉल क्लेम्स को 2001 तक गवर्न करती रही जब तक स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस नहीं आए, which allowed outside of court mechanisms of ADR to be used. Later on, जो public bodies involved me in resolving disputes through traditional methods, they led to the establishment of conciliation courts under the Conciliation Court Ordinance 1961. उसके बाद आपके arbitration councils बनी to handle family issues through the Union Council pursuant to Muslim Family Ordinance 1961 and then again in 1964. In 2001, the local government ordinance established Union Council level dispute resolution bodies called Musaliyat Anjumans to resolve disputes. However, the MAs were noted to have insignificant outcomes. In terms of provincial legislation, the Punjab Local Government Act 2013, Section 96 to 99 provides for a comprehensive overview of settlement of amicable disputes. उसी तरह KPK में भी Dispute Resolution Council DRCs अब सेटअप हो रही हैं पुलिस स्टेशंस के अंदर through the Police Order Amendment 2014. In addition to the DRCs, the KP Local Government Act 2013 also allows कि villages और neighborhood council में ADR centers खुले जो नाज़िम उनको चेयर करेगा. Recent legislations include Islamabad ADR Act 2017, Punjab Alternate Dispute Resolution Act 2019, the Code of Civil Procedures Sindh Amendment 2018, and the Punjab Commercial Court Ordinance 2021. The implement and usage of these acts, our esteemed panelists can analyze in their session. Now, Pakistan में कोई standalone mediation का law नहीं है और पाकिस्तान किसी international treaty mediation की उसने sign नहीं की. Mediation का जो हमारा primary source of law है वो है the amendment of section 89A of the Civil Procedure Code जो जिसके तहत आपके केस रेफर होते हैं और enforce होती है mediation और कुछ थोड़े provisions हैं in the small claims, minor offenses ordinance, the Industrial Relations Act, the Income Tax Ordinance, the Customs Act, and the Federal Excise Act. However, क्योंकि government of पाकिस्तान ने देखा है कि ADR की importance कितनी है, उन्होंने ADR centers सिंध में और पंजाब में establish किए हैं, मगर उधर courts refer करते हैं mediation. अब पिछले 20 सालों में with the assistance of World Bank, International Finance Corporation, and the Asia Foundation, many initiatives have taken place. However, these initiatives were for legislative reforms, professional training of judges and mediators. There has been progress, but it has been a very, very long road to progress. Now, since 2017, in the wake of judicial reforms, the Lahore High Court and the Sindh Judicial Academy have taken initiatives to mainstream court annex mediation, a procedure where judges trained by the Judicial Academy and the Asia Foundation refer cases to the mediators assigned to the high courts. And the mediations take place at the centers that are established. अब USSD की HR Human Rights Report 2019 के तहत आपके जो backlog cases हैं वो 1.8 million हैं. उसमें से ministry ने ये कहा है कि 450,000 cases have been referred to the ADR system, most of which involve family law. और पंजाब के तहत वो ये कहते हैं कि जो 30,000 रेफर हुए थे केसेस टू द 36 ADR centers in Punjab, 14,000 references उसमें successful थी और 4,000 for mediation were not successful. These look like magic numbers. However, court-annexed mediation is not without criticism. First, it starts as an adversarial environment with lawyers present who would lose their fee once the matter goes to mediation. And secondly, they will do everything in their power to convince the client that mediation ki taraf na jaye. Secondly, only a fraction of the cases are actually referred to the judges or by the judges. Secondly, it is assumed that everyone has access to court. That is not true. The formal legal system remains inaccessible to the poor, the women, minorities, and marginalized segments of our society. And the last point I would like to highlight before I go to our panelists is that Pakistan is still not a signatory to the Mediation Treaty on the Singapore Convention 2019.
and is therefore not obligated to accommodate mediation. Consequently, due to lack of enforcement mechanisms, parties from other jurisdictions would not want to enter international mediation agreements because it will not be enforceable here. And that has consequences as well, and we will talk to our panelists about them. Now, against this background, would the panelists like to add something, or should I move on to the questions? So let's go to the question. My first question is to Mr. Jawad Saab, that as we've already seen how ADR has progressed in Pakistan, what is the role of ADR in Sindh and its commercial practice? Thank you, Mehak, for the introduction and giving us the backdrop of where the ADR scene is in Pakistan. And thank you again for the question that what the current status is. I think just before I begin, since we are dealing with ADR, it may be useful for the audience and members who are listening and tuning in to just quickly remind them how alternative dispute resolution may be different. So from one end, there is litigation, which takes place in a court, and the courts currently are very congested. And that's the case in Sindh as much as it is the case throughout Pakistan. The other alternative to litigation and going to court is going for arbitration. That's a more recent phenomena, and Komal may be having more points to talk about arbitration and the other alternative to litigation, which is arbitration. And the third method that we have in dispute resolution is mediation, which is more recent phenomena, which started basically in the late mid 1970s from the Pound Conference, and this is where we are at the moment globally, and Pakistan is one of them. And from Pakistan, we move to Sindh, and from Sindh, what's the position in mediation? So I think Sindh has made tremendous progress. The mediation movement started in Sindh, and currently it's spearheaded by Shahid Safiq Saab and Justice Muhammad Ali Mazhar Saab, who have really expedited this process along with the help of the Asian Foundation to publish this manual, which gives us a framework of getting mediation out to the public. So I can tell you that mediation has a very important role for the public because it's a very flexible process as opposed to litigation. It is a confidential process, so people don't need to worry about confidentiality. And it's a much quicker process than litigation. From a practitioner perspective, because I do mediations, in 2021, I've had 2 mediations. One was successful and one was unsuccessful. In the 2 mediations that were referred to me, they were both referred to me by Justice Nadeem Akhtar Sahab. So it is one judge sitting on the original side in the High Court of Sindh who is making the referrals. And the one mediation that I'm conducting as a counsel is a mediation that's taking place within the framework of the High Court. But I am a mediation counsel, and we are working on this mediation, and it's scheduled for next weekend. So far, that's where the mediation practice is. Commercially, Sindh has made a lot of progress. And I think that progress, I will defer to Shahid Saab, since he's so involved in Sindh, to answer that remaining part of the question. But as a user, I find myself, at least as far as mediation is concerned, quite involved and busier than 2020. So over to you, Shahid Saab, and maybe Komal can give her comments. Shahid Saab, आप म्यूट हो. सिंध में जब हमने इस मेडिएशन के प्रोसेस को शुरू किया, वैसे तो ये इन रीसेंट पास्ट तो हमने एशिया फाउंडेशन के साथ मिलके किया था, लेकिन इससे पहले कई साल पहले उस वक्त जवाद साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और सईदुज़्ज़मा साहब के साथ एसोसिएट थे, और उस वक्त कराची सेंटर फॉर मेडिएशन था और उसमें काफ़ी अच्छा रोल अदा किया हुआ था और काफ़ी लोगों को ट्रेन किया था। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद जब उनकी डेथ हो गई तो वो थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो गया।
और इसके बाद अराउंड कोई 2017 में 16-17 में हमने दोबारा इसको सिंध जुडिशल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से इस प्रोसेस को थोड़ा सा और एक्टिवेट करने की कोशिश की। और पहला मरहला हमारा ये था कि हम जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कुछ ऐसी तब्दीली करें कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस नज़र आए। मुख्तलिफ जजेस से जब हमने गुफ्तगू की कि जब क्यों मेडिएशन की तरफ रेफरल क्यों नहीं हो रहा, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि एडवोकेट्स जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होते हैं वो कुछ रेजिस्टेंस देते हैं। और चुनाचा हमने उस लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट प्रपोज की और उसमें हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिला के कंसल्टेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को प्लेस की थी। और उसके मुताबिक पार्टीज जब सूट फाइल करती हैं तो वेरी स्टेज के ऊपर जिस दिन वो सूट फाइल करती हैं उसी रोज़ उनको जैसा आपको ये इख्तियार दे दी गया अंडर द लॉ कि भाई वो केस को रेफर कर सकें, प्लेंट को रेफर कर सके मेडिएशन के लिए। और तो एक ऑब्जेक्टिव तो उस लॉ को कोई अमेंड करने का ये था ताकि कोर्ट को थोड़ी सी स्ट्रेंथ हो। अच्छा, फिर एशिया फाउंडेशन के साथ हमने कोई 8-10 लोगों को अपने सिंध से ट्रेन भी किया, कुछ नेशनल लेवल पे भी उनकी ट्रेनिंग की और कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इटली से भी एक 5 डेज कोर्स को हमने करवाया। और उसमें हमारे डायरेक्टर जनरल उस वक्त थे जस्टिस खलजी आरिफ हुसैन और भी काफ़ी एक्टिव थे और उनकी सरबराही के अंदर ट्रेनिंग का अमल पूरा हुआ था। उसके बाद जब एशिया फाउंडेशन हमारे साथ आया तो फिर हम वहाँ पे हमने एक कोशिश की कि ना सिर्फ ये कराची में इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है बल्कि कराची से बाहर भी हम जाए। तो हमने कोर्ट एनेक्स मेडिएशन सेंटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने अपने लॉ में भी डाल दिया था। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत हमने सक्खर में, हैदराबाद में और डिस्ट्रिक्ट मलीर में इस तरीके से ये 3 मेडिएशन सेंटर सेट किए। और इनके यहाँ पे जो हमने मेडिएटर रखा वो एक ट्रेन मेडिएटर को अपॉइंट किया। वो मेडिएटर भी जज ही था, उसको लेकिन पहले ट्रेनिंग दी और फिर वहाँ पे एज कोर्ट एनेक्स मेडिएटर वहाँ पे उसे असाइन किया वो जॉब। तो राइट नाउ वी डू हैव 4 मेडिएशन सेंटर, 2 in Karachi and 1 in Hyderabad and other is at Sakkar. So they all are receiving cases of civil nature, and sometimes rent and family matters also refer to them and they decide. और लेकिन ये एक बात बहरहाल ज़रूर है कि वो जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए या जो रेफरल जिस तादाद में होने चाहिए वो नहीं है। पहले ऐसा था कि लोगों को मेडिएशन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन जब हमने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स एडवोकेट्स की भी और जवाद साहब के साथ कोशिश करके कुछ एडवोकेट्स की और कुछ जजेस की हमने ट्रेनिंग्स करवाई यहाँ पर सिंध जुडिशल एकेडमी में, तो उसका एक तो फ़ायदा ये हुआ कि इस आइडिया का लोगों को पता चला कि अच्छा ये ऐसे भी होता है और इस तरह फरीकैन जो होते हैं वो आपस में भी मेडिएशन कर सकते हैं। अच्छा, हमारे मेडिएशन लॉ के अंदर जो हमने अमेंडमेंट कराई इसका एक और अच्छी बात ये थी कि 2 फरीकैन आउटसाइड द कोर्ट विदाउट अप्रोचिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ they may approach to a mediator and get resolve their dispute over there, and once they reach at some conclusion, so that decision, that amicable settlement may be brought before the court and the court may pass order or judgment और डिग्री में उसे कन्वर्ट कर देगी। लेकिन ज़रा इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि जब लोगों को समझ आया तो वो साथ साथ लीडर्स जो हमारे थे बार के रिप्रेजेंटेटिव थे, थोड़ा सा उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आना शुरू हुई थोड़ा सा। और अभी तो थोड़ा सा वो एक शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ नहीं पा रहे या उस एक खौफ है कि जैसे उनकी वकालत पे असरअंदाज होगा। बल्कि हमने तो ये देखा है कि जो केसेस हमारे पास मेडिएशन में रेफर हुए और जहाँ पे हमारे पास मेडिएशन में एडवोकेट्स आते हैं तो वहाँ पे रिजॉल्व होने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली बेहतर होती है और मुमकिनात होती है कि वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि एडवोकेट्स भी अपना एक रोल अदा कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल एक मजबूरी तौर पे हम ये देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा
थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा खौफ है कहीं क्लाइंटेज लूज करने के हवाले से। तो वो बस एक ख़त्म करना है। अभी रिसेंट पास्ट में मैं देख रहा था जवाद साहब को भी एक केस रेफर हुआ था और वो बड़ा अच्छा तरीके से रिजॉल्व हुआ है। जवाद साहब कुछ मैं एक उस पर देख रहा था अपने ये मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया पे कहीं आपका एक जजमेंट देख रहा था मैं, एक एमिकेबल सेटलमेंट देख रहा था और काफ़ी कम टाइम के अंदर एक बड़ा डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। तो ग्रेजुअली है तो लेकिन ये है कि कुछ ट्रेनिंग के अलावा कुछ और करने की भी ज़रूरत है और कुछ मोटिवेशंस किसी और ज़रिए से भी देने की ज़रूरत है कि लोग इसको ऑप्ट करें, ना सिर्फ लोग ऑप्ट करें बल्कि पार्टीज भी इसमें कुछ बिलीव रखें इस आइडिया के ऊपर। Yeah, I think that's a fair assessment, Shaisab. And I think both you and I covered mediation, which is one aspect of ADR. I think it would be interesting to hear Komal comment on the other aspect of ADR, which is arbitration. Komal? Sure. So speaking about arbitration, I get a little excited when it comes to arbitration just because it has so many benefits over litigation. You know, like we discussed, there is such a backlog of cases in courts. So हमारी court system इतना ज़्यादा case load मतलब है कि you know we need to step out of litigation and get into other alternative dispute resolution mechanisms. So speaking about arbitration, it starts at the grassroots level, which is when you make a contract. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज है, इट इज देयर वेयर यू नीड टू रियली incorporate the arbitration as the dispute resolution mechanism, because if you do not incorporate arbitration as the dispute resolution mechanism, then you cannot really opt for arbitration at all. So I, as an in-house counsel, I used to make it a point that whenever I drafted, especially when it comes to, you know, international contracts, you don't want both parties, you know, one belonging to US and one belonging to Pakistan, to opt for either of the countries' court system, because it would be very unfair for a Pakistani party to go and compete in a US court where the party is US party, or alternatively where, you know, the US party has to come to Pakistan and compete with somebody who is a champion in Pakistani law. So आई थिंक अब आर्बिट्रेशन को किस तरह से जो है ना फॉस्टर किया जाए, किस तरह से उसे डेवलप किया जाए, क्योंकि आर्बिट्रेशन के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, बट द रियल क्वेश्चन इज हाउ टू रीप दोज बेनिफिट्स, यू नो. सो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक थिंग व्हिच आई कैन कम अप विद इज टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ आर्बिट्रेशन. देखें, आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड लिटिगेटर एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट आई एम अ फेयरली recent, I would say, lawyer, because I graduated in 2018 with my Masters of Law, and thereafter I practiced in a corporate law firm, Heather Mota VNR. Then I joined Mr. Makhdoom Ali Khan's firm, and then, so the good thing is that I have experienced corporate law, I've experienced litigation, and I've experienced in-house. But sadly, मुझे arbitration का exposure सिर्फ किताब लिख के और articles लिख के, but I was very fortunate कि मैंने अली अलमानी साहब के साथ एक international arbitration में मैं involved हुई थी, and the experience was remarkable. मतलब you cannot take adjournments in international arbitration. ज़्यादा से ज़्यादा if you want extensions, you'll get one extension or maximum 2 extensions, and that's it. फिर मेरा वास्ता डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से भी हुआ, तो मैं थोड़ी सी उसकी तरफ भी आती हूँ. अच्छा, अब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में अनफॉर्चुनेटली सिंध में तो ये ट्रेंड है कि रिटायर्ड जजेस ही बनते हैं आर्बिट्रेटर्स, एंड आई डोंट नो why this is the reason कि हम लोग यंगस्टर्स को इनकरेज ही नहीं करते हैं, और वही मेंटालिटी चल रही है कि नहीं भाई, रिटायर्ड जजेस को ही अडॉप्ट करना है एज आर्बिट्रेटर्स. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कोई डेवलप्ड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है नहीं. मैं हूँ एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का हिस्सा, बट आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट simply because I'm part of it. It's SICA, and it's basically doing great in terms of, you know, organizing webinars ho gaye, seminars ho gaye, you know,
ऐसे competitions हो गए, but that is not the core purpose of an arbitration center. The core purpose of an arbitration center is to have arbitrations conducted. जब वो ही नहीं हो रहा है and you're doing, वो चीजें अपनी जगह important है, I'm not underestimating the value, but so far उसको setup हुए हुए कई साल हो गए हैं और एक भी आर्बिट्रेशन जो है ना रेफर नहीं हुई है. मतलब दिस इज वेरी शेमफुल फॉर पाकिस्तान कि हमारे यहाँ कोई एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है आर्बिट्रेशन का जहाँ पे आर्बिट्रेशन रेफर हुई हो. और सब लोग, भाई आई माई सेल्फ, मैं अपनी ही मिसाल दूँ ना, मैं दूसरों की क्यों मिसाल दूँ. मैं जब आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस, एक तो आप थोड़े से लिमिटेड होते हैं, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें काम कर रहे होते हैं ना, यू कैन नॉट, स्पेशली एट द लेवल ऑफ अ मैनेजर, यू कैन नॉट से कि भाई मुझे तो ना सीका को बनाना है एज एन आर्बिट्रेशन सेंटर. Especially when the parties are international, why would they opt for सीका? They'll be like, you're gone crazy. कौन सीका, कहाँ का सीका भाई? हम LCIA को रखेंगे या CIAC को रखेंगे या फिर कोई भी दुबई में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखेंगे. जाएं आप, जो है ना ये सब उस पर महीनों बहस चल जाएगी, लेकिन मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि वो सीका को नहीं बनाएंगे एज एन आर्बिट्रेशन सेंटर. तो अब क्या किया जाए? अब उस सूरत में ये है कि भाई गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना. एक बंदा जिसमें सीका का वो प्रेसिडेंट है, वो बेचारा क्या कर सकता है? उसने ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड के लिए इतनी मेहनत कर ली है, यहाँ से पकड़ लिया आर्बिट्रेटर, वहां से पकड़ लिया. अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हमारी आर्बिट्रेटर्स लिस्ट भी वो बेचारे जो है 70s के चल रहे हैं, 60+ के चल रहे हैं. तो वो तो हम ही एडवोकेट कर रहे हैं ना. मतलब आर्बिट्रेशन सेंटर खुद ही एडवोकेट कर रहा है कि भाई आर्बिट्रेटर्स होंगे ना तो 50+ होने चाहिए, 50+ नहीं होंगे तो वो सीरियसली नहीं लिया जाएगा. मैं लड़की होने की वजह से सीरियसली नहीं लिए जाती, आर्बिट्रेटर्स जो है 40 से माइनस सीरियसली नहीं लिए जाते. तो यही ट्रेंड चलता चला जा रहा है भाई. यंगस्टर्स को आप लें, उनके अंदर एनर्जी होती है, उनके अंदर स्टेमिना होता है, वो एडजमेंट्स नहीं लेते. देखें, जितनी ज्यादा आप आर्बिट्रेशन कंडक्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप अवार्ड देंगे, उतनी ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. पाकिस्तान में ये है कि आप एडहॉक आर्बिट्रेशन करते हैं. एडहॉक और इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन में फर्क ये है, एडहॉक में जो है ना आपने बस दो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर लिया, ठीक है, अब उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है तुम नहीं हो रहे, चलो ठीक है मैं भी नहीं आ रहा. अब वो एडजमेंट्स पे एडजमेंट्स किए जा रहे हैं. और अगर एक जज है, वो एक आर्बिट्रेटर है, तो वो कह रहे हैं ठीक है मैंने नहीं देना फैसला. अब कोई वो थोड़ी है, जोर जबरदस्ती थोड़ी है. इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक प्रॉपर मतलब ये कि फ्रेमवर्क होता है. यू कैन नॉट लेट एन आर्बिट्रेटर टेक हिज स्वीट टाइम टू पास एन अवार्ड. तो आई वुड इनकरेज यंगस्टर्स कि भाई आप जो भी जितना भी एफर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं ये नहीं कह रही कि आप यूट्यूब चैनल खोल लें मेरी तरह या आप किताब लिख लें मेरी तरह. इतने बड़े गोल्स डालेंगे ना तो आप छोटों से भी रह जाएंगे. आप begin by reading on arbitration. What is arbitration? Begin by choosing courses on arbitration masters level पे. आप scholarship पे जाएं. मैं scholarship पे गई थी, मैंने स्पेशलाइजेशन किया आर्बिट्रेशन में. आप अटेम्प्ट तो करें आर्बिट्रेशन को सीखने का, आप आर्टिकल्स लिखें. मैंने डॉन में आर्टिकल, ट्रिब्यून में लिखे आर्टिकल्स और दूसरी जगहों पे आर्टिकल्स लिखे हैं. तो कलेक्टिवली जब हर कोई अपने हिस्से का शेयर देगा ना, तभी हमारे आर्बिट्रेशन सक्सेसफुल हो सकते. So these are a few comments on arbitration. Thank you, Komal. Komal has given a few tips for how the youngsters should pursue arbitration. But my question now is for the other panelists, that what can we do for there to be trust for young arbitrators so they can be given a chance and the arbitrations are not only given to judges or people with white hair? Right. So shall I'll start with that, and I'll just continue with what Komal said. I think from a principal perspective, what happens is that when you have more judges that are arbitrators, there is a deference of several elements that kick in. One is this element of seniority. So when there is a senior judge, and especially not an ad hoc single judge sitting on the panel, and there is more than two judges, then they will defer to their senior judge in terms of year or when he retired into deciding what the question and how the process would be unfolding.
So this is an element which is quite apparent in our arbitration scene here in Pakistan. The other aspect, which is quite unheard of, and so Komal is quite right in saying to institutionalize it, is this element that when I appoint an arbitrator, the arbitrator somehow, especially when there is an arbitration chosen by each side, thinks that, you know, that he is an arbitrator for that side, which naturally results in having a appointment of a neutral or a third arbitrator, which even adds another layer onto the whole process. So this whole concept that जी मैं उसका arbitrator हूँ और वो उसका arbitrator है because he's getting his fee or professional fee from it is something that we really need to look into, and it calls into question elements of ethics as well. You know, how are you making your decision process? And so that's an important question for us to answer, not only just as a legal practitioner, but also as a larger society, because this is driven by a business and commercial elements who are making that choice and saying, "Aap hamare arbitrator hain," and then it's the arbitrator who is then responding to that offer and saying, "Yes, I am," and so that creates the disparity. So your question is, how do we get over it? And I think Komal points out that it's important to start to have institutes of arbitration, you know, things like initiatives that have been taken by ADRI, you know, to hold sessions on arbitration, especially now with COVID-19, the amount of work that you've put in, both on mediation and arbitration, holding these classes online is remarkable, because you're creating space for learning and education. And that's the first step towards answering your question on how do you get more young people involved in arbitration. And this is an ageist society. It has been, and it will take some time. And this is something that's not remarkable only for Pakistan. It exists everywhere. There are fewer women in arbitration. There are fewer young people in arbitration. So this is a systemic issue globally. And we have our own underlying layers of issues that we need to address in order to overcome this. But the first step is education. Thank you so much, Alexa. Would the other panelists like to add anything to how we can make this environment better for young arbitrators? So I suppose one of the few stories, like, you know, WhatsApp has mentioned, it was similar to, I wouldn't say integrity as such. Uske problem jo bhi hota hai, wo to hota hi hai. Unfortunately, for whatever reason, clients hire arbitrators as they're hiring counsels, and arbitrators are hired like they think that they're counsels. So they at times just basically go into play with the respective counsels of that party to just communicate, acha ye karna, aise karna, which leads to a lot of problems of neutrality, integrity. And the only thing I've understood is that in between is, I don't really know how I can blame the clients, but they don't really know much, in the sense that ek arbitration mein, for example, hum log aaye hue the as umpires. And in between, the client thought best to talk to me and asked me to be involved in another case of theirs, jo mujhe as counsel rakhna chahe the for an arbitration that was happening internationally. And for whatever reason, I had to explain to them very emphatically that this is a severe conflict of interest and probably best not to do so. And their surprise made me a bit more surprised कि अच्छा इसकी हल्की सी भी knowledge नहीं है हमारे इस area में हमारे पूरी jurisdiction. अगर पंजाब की बात करें. So in Sindh, there I'm actually more curious to know if anything is different in that regard. And also, as far as the training is concerned, Masha, thank you, Jawad. As he's mentioned, we are training a lot of students. And mashallah, there has been a lot of interest from all over, from Punjab and Islamabad, of these trainings for arbitrations. But still, converting these trainings or these trained arbitrators into actually having arbitrations, as he mentioned, still an ageist problem. आपके सफेद बाल नहीं होंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा. आपके सफेद बाल आने लगेंगे. मेरे honestly, I started getting some white hair in my dari, and I remember it wasn't exactly an arbitrating thing. I was an advisor at the federal ombudsman. वहाँ पे उसी तरह cases आते थे और
लोगों ने आके जो है ना अपना करना होता, तो एक दफा मेरे सीनियर ने कहा, जब मेरी दाढ़ी निकली और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ऐसे अकबर साहब दाढ़ी रखा करो, बंदा मुतबर लगता है, बंदा बड़ा लगता है, बंदा लगता है कि कोई ना जम है और गाल बच. So essentially what it boils down to is, see, an arbitrator still has to somehow inspire confidence in his, I don't want to say client, but it is a client. He's still paying you, right? तो वो उन्होंने सोचना है कि अच्छा को कुछ आता है, कुछ कर सकते हैं, कुछ पता होगा, देखो बाल सफेद हो गए हैं. And for whatever reason, there are other elements as well that at least us young lot have to deal with. And somehow they're very personal. They will ask you if you have family, if you have children. And for some reason, these are important things because they are important in our culture. But in all sense, if you really want to bring young arbitrators to the arbitration market, you have to figure out the entire marketing of it all, the clientele and what they're interested in. For example, there is some strange assumption that judges know how to write arbitration awards. They do not. I have seen too many arbitration awards that have been painful to read, and they have been written by some from some Supreme Court judges. And I remember once I got it in my hands, and I was assisting the umpire. I handed it to the umpire and asked him, मैं अब इसका क्या करूं? और उन्होंने कहा तुम अपना काम करो, इसको साइड पे करो और बस अपना जो भी तुम्हें समझ आती है वो करने लग जाओ. I think Komal is enjoying this a lot because she's definitely smiling. I'm really enjoying it. Please continue. This is by far my favorite conversation. Okay, thank you. So in essence, arbitration itself is still giving someone the power to completely decide your dispute. I can still put in young mediators because they, regardless if let's say they know or don't know what they're doing, they can't do much harm. But if an arbitrator doesn't know what they're doing, then they're going to put down an award that may be unenforceable, that may have lots of issues, that could have an entire host of other complications as far as enforcement is concerned, right? And in that sense, you have to give the market time to actually adopt to this. I see a lot of change, particularly in law firms here, who really, really do want to give their clients a different option. And we have been working very deeply with some of the bigger ones, or the ones who have more mainstream work, to figure out what their demands are and to figure out what the clients need as well, and to somehow make it available to them. So in both the institutional or the ad hoc space, I've learned that all you first need is, let's call it a panel. And that panel could be as small or as big, because those are the first steps. And then you need to, the first step is training the panel and then bringing them onto the panel. And then once the panel is there, that is when you try to figure out how to market these particular people who may have expertise in power, in construction, in IP, in some of these very particular disputes, telecom as well, actually, that really do need, and they can actually handle these disputes and actually want all of these issues. For example, our gas companies have innumerable amounts of disputes constantly. And for them, just buying an entire arbitration package which comes with an arbitrator, with a lawyer, with a venue, with the whole host of other institutional problems is a big ask. And I'm sure the market or demand for it to exist is just a matter of bridging it. And for that, there, as with right now, Asia Foundation and all of you wonderful people, I think it's a possibility that can happen. Making it a reality requires, honestly, a lot of discussions with the actual stakeholders, which are the clients. Why or what would it take for, let's say, one of the government would be difficult, one of the private power producers, for example, to actually engage in a younger client. I have, as I mentioned with I believe earlier, I was witness to an arbitrator who was still, ईमान से वो arbitration के दौरान जो है ना सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बना है. मुझे पता इसलिए है क्योंकि पहले उसके ऑर्डर आ रहे थे ना, और ऑर्डर के नीचे एडवोकेट हाई कोर्ट लिखा हुआ था, फिर जब तक अवार्ड आया, अवार्ड के नीचे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लिखा गया. So he was young enough to be appointed and then be elevated. So that is a possibility that is happening. It's just
maybe him being able to tap into a market and then actually making it happen, or some other elements that are happening that we may not be privy to as yet. But it is a development slowly coming about, and it's very cost related as well. Retired judges, especially Supreme Court and High Court, are easily north of 2-3 million. So when you bring it down to that, or bring it off from that, then you have to pretty much understand that the amount of disputes that you're expecting to happen as far as arbitration is concerned, the cost has to come down, because not every dispute justifies that amount of cost. So that is where maybe younger arbitrators have more value. They may be, let's say the dispute amount could be something that has less liability appointed to it. So those are some of the places that we can definitely play with, but it's still a very slow evolving market. And Sika has been working on it, Ram Sajjad has been working on it for years now. And we have an entire mountain of data, what has happened, what has not happened, what can happen. So slowly we're getting there, I feel. So I was just to add something. I was speaking to senior counsel at Heather Mota, Mr. Kazim Hassan, and Kazim Hassan was, indicating that the Domestic Arbitration Act 1940 does not limit the arbitrator to have himself beholden to the CPC, and that there is enough scope within the Arbitration Act of 1940 for them to apply the IBA rules of evidence gathering, right? And that in itself, if you start using a global template, which is actually a template which can be nuanced and adjusted for customs, provides a really fast track platform for expediting evidence. Now what is happening is that actually the great event that's happening in the high courts is that the evidence is being recorded by commissions, and the commissions have been trained by the Sindh Judicial Academy. The speed of recording evidence by the commissioner now is in Sindh is faster than evidence recording by arbitration. And now evidence recording in the Sindh High Court on the original side is reduced to a trickle. So the commissioners who are recording evidence in the High Court are so good at it because they have been trained, they know how to do it, they're very fast and efficient. So they are actually outpacing everyone who is sitting in as on the trial side in a court, whether it's at the district court or the lower court. So again, it goes back to education and training. So this is one element that Kazim Hassan Saab said and reminded that reminds us is that, you are not beholden to the CPC when you're in the arbitration. You can actually take your best practices, if nothing else, from the CPC, from those commissioners. Take a page out of the handbook which Shahid Saab has probably developed at the Sindh Judicial Academy for commissioners, for young commissioners to record evidence, which is the major part of the work that one does in an arbitration process, is the evidence gathering. That's all. अकबर, मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जीतती है और गवर्नमेंट बनाती है तो वो किन की बेसिस पे बनाती है? काले बालों की बेसिस पे। इस वक्त कराची बार में, लाहौर बार में, हाई कोर्ट बार के अंदर अगर कोई लीडर जीत रहा है तो उसका बड़ा कंपोनेंट, जब बड़ा चंक उसके पास आता है वोट का, वो है काले बाल। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि काले बाल में ज्यादा ताकत है एज कंपेयर टू वाइट बाल। अच्छा जी, अब इसको जरा सा एक और तरीके से इसे इंटरप्रेट करते हैं। ये बात तो आप बिल्कुल ज़हन में रखिएगा कि ये सफ़ेद बाल जो है ना, शाहिद शफीक जो है ना, वो सैयद अकबर को और महक को और कोमल को आने नहीं देगा। ये लोग जितने बाल अच्छे बना लें तो ऐसा कर लें, शाबाश शाबाश ज़रूर कर देंगे, बहुत अच्छे लग रहे हो भाई, बहुत वेरी गुड, भी कंटिन्यू, अच्छा है, सब कुछ करते रहेंगे, स्पेस नहीं देंगे। अच्छा, अब देखिए, अब स्पेस आप लेंगे कैसे? इन हालात में आप कैसे स्पेस ले सकते हैं? ऐसा एन मुमकिन है कि एक केस अकबर के पास आता है सिविल नेचर का और एक महक के पास आता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है
कि अकबर और अकबर एंड कंपनी, जिस अकबर एंड कंपनी में, यानी अकबर एंड कंपनी में अकबर जैसे सोचने वाले कोई 2000 आदमी हैं, और महक एंड कंपनी में महक जैसे सोचने वाले 2000 आदमी है। वो सारी अप्रोचेस को आपने एक जगह किया और कहा कि यार तुम्हारे पास जो सिविल सूट आएगा ना, ये हमने एक आर्बिट्रेशन कंपनी बना ली है, इसके अंदर ये 10 आदमी 20 आदमी है। हम स्टेप अभी भी तो हम करते हैं ना, स्टेप 1 करते हैं कि वी इशू लीगल नोटिस टू द अदर साइड ना, तो उसको लीगल नोटिस सर्व करते हैं। तो लीगल नोटिस, देन द सेकंड स्टेप मे बी टू ऑप्ट आर्बिट्रेशन। और ये दोनों फरीकैन के पास अगर केस आ जाता है, किसी एक के पास आता है और उन्हीं 2000 में से किसी दूसरे के पास डिपेंडेंट अप्रोच कर लेता है, तो दो एक ऐसी सोचने वाले लोग जो है ना, वो उसको आप ही का एक ग्रुप होगा जो मेडिएशन जिस ले जाएगा, और वहां पे ले जाके आप लोगों के पास केस आने लग जाएंगे। एटलीस्ट मैं तो मेरे तो दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि वन हु इज सीनियर हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग about the law and he is competent as compared to a young lawyer. So मेरे माइंड सेट को आपने जरा सेट बदलने में बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप खुद एक अटेम्प्ट कर, एक ऐसा एक डेवलप करेंगे। हो सकता है कि आपको 6 महीने, साल, 2 साल इस कंपेन में लगे, इस आइडियोलॉजी को लोगों को अपना जैसा एक ग्रुप बनाने में लगे, और फिर दूसरों के ऊपर इन्हिसार करने की बजाय आप लोग आपस में ही मेडिएशन वाला भी काम और साथ साथ ये आर्बिट्रेशन वाला काम भी हम कुछ करने की, एक दूसरे के साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जब एडवोकेट्स की ट्रेनिंग हम कर रहे थे मेडिएशन के ऊपर, तो वहाँ मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया था कि जो यंग हैं वो अपने केसेस जो हैं एक सीनियर एडवोकेट के पास ले जाए, उसका नाम वो मेडिएटर हो, और वहाँ पे अपने मामले को रिजॉल्व कर लें। तो यंग बच्चे को कंपैरेटिवली हारने के इम्कानात कुछ ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सीनियर, तो उसके हारने के इम्कानात भी ख़त्म हो जाएंगे, वो तो विन विन पोजीशन में आ सकता है। तो कुछ आप इस तरह भी सोच के देखें, तो कहीं कोई तो नहीं स्पेस दे रहा, तो आप अपनी इन्हीं हालात में कैसे स्पेस बना सकते हैं उसके बारे में शायद सोचे, तो कुछ अगर मिल जाए तो फिर हमें आप हरा सकते हैं। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक जरा मुश्किल होगा। ठीक है अकबर? सर डन है, आपको हराने का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मजेदार तरीके से खेलने का तो जरूर इंटरेस्ट है, तो वो करते हैं। आप मैं हराने और जीतने से मुराद बस सिर्फ ये लेता हूँ कि एक बेहतरी सिस्टम में आ जाए, मतलब हम एक मखसूस तरीके से काम करने की करते करते हम उसके आदी हो गए हैं, और वही करने से कोई नतीजा बहुत बेहतर निकल नहीं रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक नई अप्रोच को आपने अप्लाई करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, कुछ कोशिश करें। मैं शाहिद साहब एहसन रिजवी साहब से बात कर रहा था, एंड एहसन रिजवी साहब हेड्स रिया लॉ एंड ही इज अ ग्लोबल आर्बिट्रेटर ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन. And he made a very interesting comment. And this goes back, Akbar, to our earlier discussion on artificial intelligence, and it was refreshing. And he said, Jawad, the first step that you take with regards to artificial intelligence and improving your judicial system is getting all your judgments online, documenting all your cases so that there is data. Because the first step is gathering all the data. And we can see in the Sindh High Court and the lower courts that every time there's a judgment, it's uploaded. Now, those judgments which are being uploaded need to be analyzed and run through artificial intelligence systems. But we have taken the first small baby step of actually getting there. And we've done it without actually recognizing or knowing it. Okay, bhai, we are taking a first baby step for big data. And this whole movement in Sindh to gather all the data, put it online, is the first small step, and the one giant leap which will eventually come when we get the logarithms right for pooling in and extracting this data. Just one more point on that is, that we are actually making progress. So I don't want this to be sounding like, oh, bas tabahi ho gayi, but actually, we are making incremental progress. We're not
it's not a revolution, it's a transition, and it's a legal transition. The other thing, that I read in from DIAC, which is the Dubai International Arbitration Center. In Dubai, they came up with a plan called the 2020 plan for Dubai, which is the next 20 years of legal education in Dubai. And one of the things that the Amir of Dubai has now said is mandatory for LLB courses is coding. He says, the book says, the policy says that lawyers must know coding, because who's going to analyze this big data that's coming in that you are gathering with these reported judgments that you are posting online? It has to be done by someone who understands and appreciates the finer points of jurisprudence. And if that person does not know computer coding, and you get someone from the outside to code and make those algorithms, because the next ADR is going to be AI. So if the next ADR is going to be AI, then you want to teach your lawyers coding. And that's what they're planning to do in Dubai in their LLB program. So maybe, it sounds too far-fetched and unbelievable, but, these are things that one can take. It sounds really silly now, but it can have great advantage. So I think we are making progress on ADR in ways that perhaps we don't know because we are so embedded in the system. Sometimes we are reminded from lawyers like S.N. Rizvi Saab sitting in London. So that's all I wanted to share with you. Thank you so much, everyone, for your insights. And I think that everyone has, even students and young lawyers, they have a lot of interest in arbitration. And as we have seen that, and Javasa has said, it's not a revolution, it's going to be a slow transition. And it's just not arbitration that's an ADR method. The other ADR method that is coming forth and globally that is also successful is mediation. So my question will be to Javasa or anyone else who wants to take it up, that in practice, do clients have mediation clauses or mostly arbitration clauses out there? And if yes, agar mediation clauses hote hain, are they taken seriously? So, well, there is actually a reported judgment. I can't remember the case name, but in that particular reported judgment, there was a mediation clause and an arbitration clause. And the judge who actually upheld the enforceability of the arbitration clause, and it was a New York Convention case, completely disregarded the fact that it was a step-up clause. So there was mediation, and if that fails, go into arbitration, which is a classic ICC multimodal arbitration clause now. And so I think the answer to your question, Mehak, is really it depends, who's reading the clause, how they wish to read the clause. So mediation is a process where the party can decide for themselves whether they want to go into mediation or not. And Komal can expound on the fact that, an arbitration agreement is a enforceable agreement, but a mediation is an option. So mediation remains an option, but an arbitration is enforceable. And I defer to Komal on the arbitration, but I think the answer to your question again, Mehak, is it depends on the parties, it depends on the lawyer, on how well they pick up mediation because it's an option. Komal? So, being an in-house counsel, I think I've drafted so many contracts, and almost always we choose arbitration. Mediation is hardly there. Reason being, a lot of times, just for practical reasons, what happens is that in a multi-tier clause, so a multi-tier clause is when you choose mediation first, or rather negotiation first, and then mediation, and then arbitration. I often joke around regarding arbitration that, oh, arbitration is just the first step to litigation. Believe me, the majority of the questions that I've been asked are, oh, Komal, can we skip arbitration and somehow, go to court? This is like the standard question I've been asked by almost all my friends and colleagues. So, which makes me feel that even if, you incorporate arbitration in the contract, the default mindset of the party who is the losing party or whose case is weak is to let's prolong the arbitration process by first instituting a suit,
And then we will just, let the arbitration go on, and then there will be an ex parte award, and then so on and so forth. I have personally not really come across that many contracts where mediation has been mentioned. And in LSE, when I studied the dispute resolution course, the drawback of mediation is that it is not the final and enforceable agreement, unlike arbitration. Arbitration award is final and binding on the parties. Yes, of course, you can have a contract in mediation and then enforce it in a way which becomes binding. But unlike arbitration, mediation is still not as strong of an award, or you can say an agreement, as compared to arbitration. So I think Shahid Saab should now simply jump in because he's the author of some radical amendment to the CPC in 2019. So Shahid Saab, maybe now is a good time to kind of remind us of what happened in 2019 and how this new provision of CPC came around to enforce mediation settlements in court. आपका माइक ऑफ है. 2019 में जो अमेंडमेंट आई थी उसको फॉलो करते हुए वी सेट अप मेडिएशन कोर्ट एनेक्स मेडिएशन सेंटर because in new amendment the concept of court annex mediation centers was introduced, and we trained the judges and they were appointed over there. Right now we have 4 mediation centers. One is in district Mali, other Hyderabad, and another at Sakhar. So they are receiving cases, and the judges, their colleague judges who are working in the same district, they refer cases to them, and they make an attempt to resolve through the process of mediation. So there are few cases where they could get success, but most of the time, right now we observe that they are not getting success in ज़्यादा rate, success rate कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. और शायद साहब आप हमें ये बताएंगे जो CPC में तरमीम हुई है जिसकी वजह से आप अब सेटलमेंट एग्रीमेंट इन्फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि कोमल का जो कमेंट है वो बड़ा यूजफुल है कि वाकई में आर्बिट्रेशन लीगली इन्फोर्सेबल सबको पता है, मगर जो आपने तरमीम की CPC में उसके बाद क्या हुआ कि प्री ट्रायल सेटलमेंट्स किस तरह इन्फोर्स किए जाते हैं और अगर ट्रायल के दौरान रिफरल हो तो वो कैसे इन्फोर्स होता है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं. ठीक है. तीन स्टेजेस हमारे यहाँ हैं जहाँ पे मेडिएशन के प्रोसेस में को ऑप्ट किया जा सकता है. पहला स्टेप हमने लेजिस्लेशन में एक मौका ये फराहम किया कि द मोमेंट एडवोकेट प्रेजेंट अ प्लेंट बिफोर द जज एंड जज स्टार्ट पेरूजल उसको हो जाए और उसकी स्क्रूटनी कर ले और मुतमईन हो जाए कि सूट मेंटेनेबल है, तो इट इज फॉर द जज टू टेक डिसीजन वेदर द केस may be a case after admission. Defendant may be asked to file written statement, or he may direct the parties for issuance of notice and asking them, okay, why not your case may be referred to mediation for mediation. तो हमने जो एक अटेम्प्ट किया कि जिस मोमेंट प्लेंट प्रेजेंट हो रही है जज को एक इख्तियार दे दिया कि वो डिसीजन ले ले कि ये केस रेफर किया जाए कि ना किया जाए. पहला काम तो एक ये हो गया. फिर दूसरा स्टेप ये हुआ कि फर्ज करें कि उस रोज जब केस की सिर्फ प्लेंट को पढ़ा है और जज साहब कहते हैं कि नो इट इज नॉट फिट केस टू बी रेफर फॉर मेडिएशन, तो फिर वो रिटन स्टेटमेंट मंगवा लेंगे डिफेंडेंट से. तो सेकंड स्टेप है जब रिटन स्टेटमेंट आ जाता है तो रिटन स्टेटमेंट को गो थ्रू करने के बाद फिर एक अटेम्प्ट करते हैं, फिर वो एक डिसीजन लेंगे कि आया प्लीडिंग्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को देखने के बाद ये अंदाजा लगाएंगे कि ये केस रिजॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर कंपेल करेंगे पार्टीज को. वहां पे ये जरूरी नहीं है कि फरीकैन अपनी कंसेंट दे, यहाँ पे कोर्ट को लॉ के ने एक इख्तियार दे दिया टू टेक डिसीजन वेदर द केस इज टू बी सेंट और नॉट. वो कोर्ट ने डिसीजन लेना है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा जरूर होता है
کہ कोर्ट जब अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर रही होती है तो पार्टीज फिर सरेंडर हो जाती हैं और कंसेंट भी दे देती हैं, लेकिन बहरहाल कोर्ट को अब ये इख्तियार दे दिया। अच्छा, तीसरा एक और स्टेप है कि पार्टीज कंसेंट से कभी भी कह दें। अच्छा, एक और स्टेप है, एक और सेक्शन का इंट्रोड्यूस करवाया हमने, सेक्शन 89B। सेक्शन 89B वो 4th वन हो गया और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ख़ासतौर पे अकबर और महक के लिए वो ज़्यादा अच्छा है अगर इस एज के लोग हमारे सिंध के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 वकील अपने मामले को कोर्ट में ले जाने की बजाय मीडिएटर के पास डायरेक्ट ले जाए और वहां पे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर मामला रिजॉल्व हो जाता है तो एमिकेबल सेटलमेंट मिल जाएगा, और एमिकेबल सेटलमेंट जब मिल जाता है तो उस सेटलमेंट को कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है, और कोर्ट में सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं सेक्शन 89B के तहत जुडिशियल मिसलेनियस एप्लीकेशन, और उसके साथ वो जमा हो जाता है। अच्छा, अगर ऑर्डिनरी केस कोर्ट में फाइल होता तो उसमें अप टू 15,000 कोर्ट फी भी अदा करनी थी, लेकिन हमारे अगर मेडिशन वाला मामला है, 2 फरीकैन शाहिद साहब और सरवाना साहब के पास आ जाते हैं मेडिएशन के लिए, तो हमारे पास जब आएंगे, मेडिएशन हमने करके दे दी, कामयाब हो गई, तो वो हमारे एमिकेबल सेटलमेंट को कोर्ट में सबमिट करेंगे एक जुडिशियल मिसलेनियस एप्लीकेशन के साथ, और उसके अंदर कोर्ट फी नहीं लगाएंगे, और बगैर कोर्ट फी लगाए हुए, और कोर्ट उस एप्लीकेशन के साथ जो एमिकेबल सेटलमेंट लगा होगा जिसे मीडिएटर ने अटेस्ट किया हुआ होगा, उसको देख के, उसकी लीगल एप्लीकेशन को बस देख के कि लीगली वो डॉक्यूमेंट सही है, एमिकेबल सेटलमेंट सही है, तो उसको जजमेंट और डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी हमारा उसमें इस लेजिस्लेशन के में अच्छा एक इम्पैक्ट है, और उसकी वजह से सरवाना साहब भी गुज़िश्ता दिनों हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग करवा रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट 20 मिनट हम इस मेडिएशन वाले पे बात करते थे, तो हमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स में अब जो कराची से बाहर वाले हैं, उन्होंने कहना शुरू किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप 2 आदमियों को एक एक्सपर्ट मीडिएटर बना दें, तो फिर हम अपनी कंपनी वहाँ पे खोल लें, हम अपना मेडिएशन सेंटर खोल लें, और फिर हम क्योंकि जो हमारे ये हैदराबाद को अगर क्रॉस करें तो सिविल और क्रिमिनल दोनों किस्म के केसेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टीज गेट रिजॉल्व देम विद इंटरवेंशन ऑफ कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड न्यूट्रल पर्सन, उसे वो वडीरा का नाम दें, उसे वो खान का नाम दें, तो वो उनके ज़रिए ये मामले रिजॉल्व हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे एडवोकेट्स में से कुछ लोग मेडिएटर बन जाएं, ट्रेंड हो जाएं, सर्टिफाइड हो जाएं, तो हाँ ये होगा। तो अब सिंध जुडिशल एकेडमी उसे प्लान कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि मोहतरम डायरेक्टर जनरल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर, और उन्होंने हमें हिदायत की है कि इस किस्म का प्रोग्राम करें, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट एनेक्स मेडिएशन सेंटर के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वकला खुद भी अपना सेंटर बनाए और मामला को मेडिएशन के जरिए रिजॉल्व करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई अगस्त के अंदर हम ट्रेनिंग प्लान करेंगे एडवोकेट्स के लिए, और इस साल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राइवेट मेडिएशन सेंटर का सेटअप भी मुमकिन है सिंध की हद तक। और वो वजह होगी सेक्शन 89B, उसकी वो वजह जो है वो सेक्शन 89B है, जिससे लोग थोड़े से ज़्यादा आसानी महसूस कर रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अदालत ही केस दाखिल किया जाए और अदालत ही केस को रेफर करे। अब यहाँ पे तो फरीकैन के उसमें डाल दिया, और हम किसी हद तक वकला से को बताने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, या वैसे जब मिल रहे हैं। और ये जो हैंडबुक बनाई है, जो हमने हैंडबुक बनाई थी, उसमें नाम जरूर शाहिद शफीक का लिखा हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल एडमिट करूंगा कि शाहिद शफीक के अलावा बहुत सारे दोस्तों ने उसके अंदर इनपुट दिया है, और जवाद साहब और उनकी टीम ने बहुत वैल्यूएबल इनपुट दिया था जो मैंने इंकॉर्पोरेट किया था, और हमने जवाद साहब उसमें आपको एक्नॉलेज किया है, शुक्रिया भी किया है। तो उसमें हमने कोशिश ये की थी कि जज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको इस नए लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो जाए, किस स्टेज पर किस किस्म की एप्लीकेशन फाइल होगी वो मैकेनिज्म बता दिया, किस किस्म के ऑर्डर पास होगा,
किस किस्म की डायरेक्शंस इशू होंगी, किस किस्म का नोटिस इशू होगा, वो सब उसके स्पेसिमेन दे दिए हैं ताकि अदालत को जब रेफर कर रही हो तो केस रेफर करे, या 89B के तहत केस आया है तो कोई दुश्वारी पेश ना हो। तो कुछ स्पेसिमेन इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस वगैरह हमने उस पर फराहम कर दी हैं। Yeah, so I think to answer Komal is that, now there is a process and a procedure in the CPC, which is actually allowing judges to make these choices. And this is a procedure which is kind of not known to most lawyers, and they're just picking up on this procedural change, partly because of COVID in 2020, and the whole year went by without anyone picking up that the CPC after the 18th Amendment had got this new provision, which is not in Punjab. Punjab is going its different way on mediation, and Islamabad is going on its different route. But in Sindh now you have a more substantive Section 89 and Section 10(1) ABC. And so lawyers can actually make use of it. And it's again up to the lawyer, the user, whether they invoke that clause and use mediation, and for those for the arbitration. So yeah, back to you, Komal, because I was rebutting you. You must have your last reply. So much, Jawad. I am so much into arbitration, to be honest, that I get blindsided sometimes, So you're right, I did come across that provision, but I'm just so focused into arbitration that I'm like, okay, arbitration is, so I'm the other way around. People are so focused into litigation. I'm like so focused into arbitration. So thank you so much for that. And yeah, I'm really grateful for your comments. आपने शाह शफीक साहब, अगर आपका इसमें कोई हाथ था ना 89B में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी पिछले ही महीने मुझे अभी शुक्र हम पंजाब में कमर्शियल कोर्ट बना रहे हैं, तो मैंने उनके जजेस को ट्रेन करना था, और मुझे कहा गया था कि सर मीडिएशन के मैकेनिज्म और एनफोर्समेंट पे ना कुछ ढूंढे। इंडिया पे देखा, यूके का मुझे पता था, फिर आप लोगों का सिंध का मैंने गलती से देखा, बिकॉज जवाद ने कुछ ना कुछ चीजें मुझे भेजना शुरू कर दी थी, एंड आई वाज लाइक ये कैसे हो रहा है, जो भी हो रहा है। आपका मैंने 89B पढ़ा है, और मुझे अपने जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स है ना, उनको सुनाने का दिल कर रहा था, बिकॉज जजों ने एक ही चीज पूछी है, क्योंकि अगर मैं एक मीडिएशन कर लेता हूँ तो उसका क्या फायदा। और ऑनेस्टली हर जज जो बैठा हुआ है, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ सर्टेन प्रैक्टिस, देयर इज ऑलवेज वन पर्सन, एंड देयर वाज वन पर्सन जिसने पूछा, सर जी एडीआर जो सेटलमेंट होती है वो चैलेंजेबल, उसकी अपील कर सकते हैं। मैंने कहा जिंदगी में तो हर चीज की अपील कर सकते हो, लेकिन मुश्किल है सेटलमेंट को अपील करना, उसके तो फिर एडीआर तो फायदा की। मैंने कहा यार सिंध का देख रहे हो, मैंने कितना फायदा बनाया हुआ है, क्योंकि 89B डाल दिया। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट डाल दें, लेकिन आप लोगों ने वो एक क्लॉज जो डाल के ना, मुझे लगता है पाकिस्तान का एक स्टेप आगे किया है, कि अगर हम लोग मीडिएशन सेंटर्स या बाकी सब की बात कर रहे हैं, तो वो अब करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, क्योंकि नाउ private mediators like me, Jawad, and inshallah Komal as well, she'll come into our dark little world, will also be able to completely make use of this. And having said that, there's one, jab aapka actual sawal tha na mediation clauses ka, I have a story, I feel like I have too many stories, huh? But this is the power sector, और एक PPA में लिखा हुआ कि जी on the tier dispute resolution clauses, negotiation करनी है, mediation करनी है, arbitration करनी है। अब मीडिएशन का पॉइंट है, मुझे मीडिएटर साहब ने कहा कि यार आ जाओ इसमें देखो मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई वाज थिंकिंग ओके, शुक्र है पावर सेक्टर मीडिएशन हो रही नहीं हो रही है। लेकिन देन आई रेड द क्लॉज एंड कॉल्ड इट एक्सपर्ट मीडिएशन, एंड देन आई फिगर्ड आउट द प्रोसेस, एंड देयर वाज एक्चुअली एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन. So even when you use these clauses, the problem is Pakistani market, specifically the legal market, doesn't use it like you would, like Jawad or I would want to do a mediation, for example, where you are having a facilitative session and getting the parties to agree on a settlement. No, the expert mediator was required to give a report, a non-binding report, which was just meant to basically, जब मैंने पार्टी से पूछा कि तुम लोगों को इसका फायदा क्या है, और जवाब भी आया कि सर होता ये है कि आर्बिट्रेशन के लिए ना इश्यूज क्लियर हो जाते हैं। और इस चीज को मुझे समझ नहीं आई कि अगर आपने इतना प्रोसेस आया करना है तो उसको सिर्फ इसलिए करना था कि आर्बिट्रेशन आसान हो जाए। जी सर लिखा हुआ तो करना तो है, लेकिन फिर भी इससे जो है ना हमारा आगे आईसीसी में मामला सारा क्लियर हो जाएगा। So that is how, even if you have mediation clauses sometimes in our little industry,
they are misinterpreted or twisted into whatever is comfortable for the lawyers and so on, because they just don't want to actually sit and discuss their interests. They want, अच्छा मुझे mediator कोई report दे दे वही हम देख लेते हैं सही है नहीं सही, या arbitrator award दे दे वही सही है नहीं सही है. Because in essence there is another issue that we're not talking about right now. A lot of these arbitrations are with the government. The government or the government employees are not comfortable settling. Every conversation about settling is an immense scale liability opening for a NAB case to them. کہ جی ہم نے سیٹل کر لیا, ہم نے آپ کو کوئی نہ کوئی پیسے چھوڑ دی, کچھ اور کر دی, تو ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے گی. تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے, آپ کورٹ جائیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں, وہ تو جا کے جو بھی ہوگا کر لیں گے. کورٹ سے آپ آرڈر کروا لیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں. That is something we need to change. But there are mediation clauses. I've seen some of them. No one uses them as such. And as Komal mentioned, you just skip past them. Like you would want to skip past arbitration. You just skip past them, unfortunately. شاہد صاحب آپ کا مائک. اکبر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر ہمیں اس میڈیشن کے پروسیس کو, آربیٹریشن کے پروسیس کو تھوڑا سا اسپیڈی کرنے کی کوشش کرنی ہے یا کامیاب کروانا ہے, تو شاید ہمیں سی پی سی کے ایک سیکشن ہے 35 اور 35A, اس کے استعمال کی کثرت سے اس کو استعمال کرنا ہوگا. وہ مجھے یاد ہے کہ میں کچھ عرصے تو نہیں, بہت عرصے پہلے میں ہائی کورٹ کا حصہ تھا ریسرچ آفیسر کے حوالے سے. تو سروانہ صاحب کے والد صاحب مشہور اسی بات پہ تھے کہ کاسٹ امپوز کرنے میں انہوں نے جہاں دیکھتے تھے کہ 35 استعمال کرنا ہے اور 35A پرٹیکولرلی استعمال کرنا ہے, تو وہ دیر نہیں کرتے تھے اور اس کو کرتے تھے. تو لٹیگیشن کا عمل کمپیریٹیولی نہ صرف کم ہوتا ہے بلکہ میڈیشن میں ہمیں سہولت ملے گی کہ دیکھو اگر ہم ہار گئے تو ہارنے کے بعد ہمیں نہ صرف کاسٹ کو دینا پڑے گا, اور کاسٹ صرف 35 والی کاسٹ دینی پڑے گی, بلکہ 35 کے علاوہ دوسری کاسٹ بھی دینی پڑے گی. تو ہمیں تھوڑا سا, اگر نارمل کورٹس ہیں, ہمارا سسٹم جو چل رہا ہے, کیسز چل رہے ہیں, آخر میں جب کیس کا فیصلہ ہوتا ہے کہیں پہ ہم جج صاحبان کو اس بات کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں. میں نے ویسے بھی ریسنٹ پاس کے اندر 35A کو نہیں پڑھا, لیکن جو میری پرانی میموری کہتی ہے کہ جب میں کاسٹ نہیں دوں گا تو اس کی وجہ بتاؤں گا. اور ہم ہم ججز جو ہے سول کورٹ میں نارملی کبھی کبھی ایک لائن لکھ دیتے ہیں کہ ود نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ, آخر میں ہو جاتا ہے ود نو آرڈر ایز ٹو کاسٹ, بس بات ختم ہو گئی. لیکن وہاں پہ تو لکھا ہے کہ جب ہم نے جب کاسٹ نہیں دینی تو اس کی وجہ بتانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی نیڈ ٹو رائٹ جسٹیفیکیشن دیٹ وائی آئی ایم ناٹ امپوزنگ کاسٹ. سو پرہیپس اس کو ذرا سا ہم دیکھیں گے تو اس کی روشنی میں جب آپ لوگ اپنا کیسز کو جیتنے کی طرف اور ڈگری کی طرف جا رہے ہوں اور آپ کو یہ لگتا ہے, تو کاسٹ کے ایلیمنٹ کو آرڈنری کیسز کے اندر ہم بڑھائیں گے, تو ایمفیسائز کریں گے تو شاید. اور اگر ہم فورن جوریڈکشن میں چلے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کاسٹ کے ڈر سے سیٹلمنٹ کی طرف آتے ہیں اور میڈیشن کی طرف آتے ہیں, اور ہمارے یہاں کاسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو تھوڑا اس کو بھی ہم دیکھیں تو ذرا اچھا ہو جائے گا. سر آپ کی بات بالکل درست ہے. From all the research that we've done, the only reason that UK is successful in mediation is because of cost penalties. انہوں نے مینڈیٹری کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے میڈیشن کو کنسیڈر نہیں کیا اور آپ نے اس کو ریزنبلی استعمال نہیں کیا تو آپ کے کاسٹ لگے گی. ابھی ہم نے پنجاب میں جو کمرشل کورٹ کی آرڈیننس تھی اس میں مجھے دکھ یہ زیادہ ہوا ہے کہ اس کے اندر کاسٹ کا زیادہ لکھا نہیں گیا کہ میڈیشن کا ریفرل مینڈیٹری ہے, لیکن کاسٹ کے اوپر اتنی بات نہیں ہے. مجھے پھر بعد میں جو ہے زیادہ کانورسیشن کرنے کے بعد سمجھ آئی ہے ہمارے پاس کاسٹ کی اتنی جورسپروڈنس نہیں ہے سر. ہمارے پاس جو کاسٹ کے اوپر ساری کہہ لیں کیس لا ایک پوری ہسٹری بنی تھی نا, ابھی تک بنی نہیں ہے. اس کے بغیر جو ہے ہمارے ججز ڈرتے ہیں کوئی نہ کوئی کاسٹ آرڈر امپوز کرنے میں. اس کے اندر مجھے لگتا ہے آپ کی بات بالکل درست ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور اس کے اوپر ہمیں ضرور ڈیولپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کاسٹ کا معاملہ بہت ہی ضروری ہے, لیکن اپیرنٹلی ابھی تک بہت خطرناک ہے کچھ جوڈیشری وغیرہ کے لیے. انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے.
Thank you so much, Akbar and Judge Shahid Saab, for your comments, and Komal as well. मेरे दो सवाल हैं. एक अकबर से है कि शाहिद साहब ने तो बता दिए सिंध के हवाले से about court annexed mediation and the other mediation as well जो court annexed भी ना हो section B के तहत, and how that is enforceable. Can you tell us that if it is not court annexed mediation, are there any ways for the settlement agreement to be enforced in Punjab? So I think you mean the private mediations, right? Yes. So private mediations Punjab mein issue yahi aa raha hai. So there has been pehle hamara section 89A hota tha. It is similar to maybe the one Sindh had, although that is more comprehensive. That section was repealed by the Punjab ADR Act. Punjab ADR Act is also very, let's call it strictly court annexed mediation. Although it does talk about accreditation, it does also talk about mediation centers in Punjab now, but there is no specific provision to allow any accredited mediation mediator or mediation center to use the act or use the provisions of the act unless it has been referred by the court. So as yet, Punjab mein section 89B jaisa kuch nahi hai. So that is something that we still need to work on. And inshallah, I feel like Shah Shafiq साहब ने हमें बहुत help करनी है. ये हमारे से बहुत calls देनी है ताकि हम लोग इसको यहाँ पे किसी ना किसी तरह लगा सकें. Inshallah. आपने जिस तरह भी बात की accreditation की, this question is to all the panelists कि appropriate accredited training की क्या अहमियत है for ADR practitioners? Does a simple LLP suffice, or do they need appropriate accredited training in order to practice ADR? शायद साहब आपका म्यूट. हमारा जो लॉ प्रोविंशियल लॉ है उसमें एक तरफ तो हमने कह दिया कि मेडिएटर की एक क्वालिफिकेशन रखी है कि 40 आवर्स की जिसके पास ट्रेनिंग होगी वो मेडिएटर के तौर पे काम करेगा और रजिस्ट्रेशन करवाएगा हाई कोर्ट में. इसी तरीके से फर्म की मेडिसिन सेंटर की रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस हमने डिफाइन किया लॉ के अंदर ही. अच्छा, इसके अलावा एक जगह हमने बहरहाल ये भी लिख दिया है कि अगर फरीकैन किसी और शख्स के ऊपर एतमाद करते हैं तो उसे अपना मीडिएटर बनाना चाहते हैं तो बना दें. अभी मैं गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हम और जवाद साहब एक साथ थे, तो इनके जो मेडिएटर्स हैं जिन्होंने मेडिएशन की ट्रेनिंग ली हुई है लेकिन बाय प्रोफेशन वो लोग एडवोकेट नहीं हैं, तो जो एक खातून थी, मैडम थी, इंजीनियर साहिबा थी जवाब मेरे ख्याल में, तो वो मेडिएटर वो एडवोकेट नहीं थी लेकिन उन्होंने एक मेडिएशन के प्रोसेस को समझा हुआ था और अपनी फील्ड के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर बड़ी इफेक्टिवली मेडिएशन करती हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं. अच्छा, हमने एक तरफ तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ तो हमने क्वालिफिकेशन भी रख दी कि इतने घंटे की मेडिसिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन एक हल्की सी क्लॉज वहाँ पे ये भी डाली हुई है कि अगर फरीकैन किसी खास शख्स को मिसाल के तौर पे किसी अपने दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं भाई मौलवी साहब पे एतमाद है या किसी उस्ताद पे एतमाद है या किसी पॉलिटिशियन पे एतमाद है या फैमिली के किसी हेड के ऊपर एतमाद है, तो वहाँ जाके मसले को हल करा सकते हैं. तो हमारा लॉ इस तरह रिजिड नहीं है कि वो सिर्फ ये कहे कि वन हु हैज कंप्लीटेड दिस 40 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वही करेगा, दूसरा भी स्पेस थोड़ी सी दी हुई है. लेकिन बहरहाल 40 घंटे ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट लॉ में इंट्रोड्यूस टेक्निक्स हो तो वो जरा कंपैरेटिवली आसानी से और बेहतर तरीके से काम को कर सकेगा. I think these are also very important from a gender perspective, क्योंकि अगर आप gender perspective को देखें तो ये जो आपके पंचायत सिस्टम और जो ट्रेडिशनल वडेरा सिस्टम है उसमें there is no rule for women in dispute resolution, and it is very important to be 21st century rather than 17th century. And so this kind of mechanisms actually is enabling because it allows women to participate in the process as much as men, and it gives cover to that as well. So this is very important, and the CPC now provides these provisions and it's embedded in CPC now.
I will be taking a question Sorry. from. Do you want to add something, Akbar? So sorry. On the accreditation part, sir, आपकी बात बिल्कुल सही है. अगर I think Komal has also maybe witnessed it. Sometimes you see arbitration clauses that simply say that flan CEO of the company will be the arbitrator, and that man may or may not have any training. But I think the idea that we're trying to build for ADR and for as ADR practitioners is that it's still up to party consent. But for help with that consent, we are providing these people who have been trained in a certain way. And I think ये एक rapport, एक reputation building exercise है, जिसके अंदर पहले तो accreditation कौन दे रहा है, उसने अपने आप को prove करना है कि अच्छा हम जो accreditation देते हैं वो इस level की है, वो ऐसी training की है और उसकी वजह से ये result आएगा. Similarly with the arbitrators and mediators. So I'm sure Jawad has done it, and we also offer a 40-hour training as well from ADR International. वो UK से accredited है, Singapore से accredited है, IMI से भी accredited है. But converting those accreditations or those value of those accreditations to a Pakistani market is not an automatic thing. तो उसके अंदर हमारे clients देखते हैं कि अच्छा तुमने ट्रेनिंग कर ली, कुछ भी ट्रेनिंग कर ली अभी के लिए, for example, maybe makes you a more liable, or sorry, a more credible mediator than someone else. But accreditation is an important step. And the only way that it's going to work is if you build it alongside whatever, let's say, a review system या कोई और system, जिसके अंदर mediators की भी qualification clear हो, arbitrators की भी हो, और आप उनको अच्छी तरह highlight कर सकें कि इन्होंने ये training ली है, उसके आगे ये expectation है, so on and so forth. Thank you for answering that. I think it also answers one of the questions the participants ने पूछा था इस हवाले से कि should we be taking these courses which are costly and we're lawyers, and would that actually help us आगे जाके? Now I would like to ask about, we are like more than halfway through. We are talking about Pakistan, past, present, and future, and we've talked a lot about the present as well. I would like to know that how do you think that currently the government of Pakistan is promoting ADR, and what do you think can be the role of private platforms to promote ADR more in order for it to be successful in the future? Akbar, Jawad Saab, or Shahid Saab, whoever wants to take it. Or Komal. I think, I think I would like to ask Komal a question because she will set up the scene really well for your question. And I think it goes to the answer. So Komal, can you perhaps, and I'm sure you generally, what is the position of Pakistan in the international arbitration scene? How successful has the government of Pakistan been in international tribunals? Because the answer to the question will lead to perhaps why it is important for government to focus on arbitration and building stronger institutional arbitration. So can you just tell us, where is Pakistan in the arbitration world? So I'll be very honest, Jawad. My experience of arbitration has generally been in the academic side of things. And as far as the government is concerned, and how it is in the international setting, I would rather refrain from commenting anything which is not in line with what the actual picture is. So I'll admit candidly that if you have any question to ask regarding my book, regarding the content of arbitration, regarding New York Convention or the 1940 Act, please shoot a question. But I unfortunately I'm not equipped with the knowledge which you just required perhaps to answer. Okay, all right, no, not an issue, but I'm sure you know this, that so we are a signatory to the New York Convention, right?
And if you look at this, if you look at Pakistan's involvement in this as a signatory to the New York Convention, right? So far, the courts have been quite proactive in upholding arbitration agreements as far as the New York Convention is concerned, right? But when you go to investor-state mediation and you're looking at ICSID and you're looking at the results. So when you look at ICSID, right, there have been 9 referrals so far to ICSID, and Pakistan has lost 8. Right. And so the government of Pakistan is always on the back foot. This is not unusual for ICSID arbitration, which is investor state arbitration, right? But it certainly points out that somehow institutionally, Pakistan needs to strengthen its arbitration baseline, right? And in investor state arbitration, there is also an element of mediation, right? So there is something called a cooling down period. In a cooling down period, the government, including government of Pakistan, on 8 occasions had the opportunity to try mediation for whatever it was worth with the foreign investor who had sued Pakistan. And on 8 occasions, the government of Pakistan decided to just let the cooling off period time go into abyss and made no useful purpose of it, which they had the option to do. And so from a investor state process, one, you need to make use of opportunities which are provided in the procedure for mediation. Use it. If you don't have mediators in Pakistan, approach mediators globally. Try and work that cooling off period to your advantage. And that goes back to improving institutions that train in mediation. And then finally, you know, we have strengths, right? So we have SICA, we have ADR International looking into arbitration. There's yourself, you know. So build strong institutions that we develop strong strength in investor state arbitration and arbitration. And as you know, arbitration and litigation are 2 different animals. They seem like they're the same, but a good litigator does not make it a good arbitration counsel. It's a whole different jurisprudence. And so I think the answer to Mehek's question about what the government should do is that look at what's happened in the past. If you want to avoid the mistakes of the past, invest in building stronger arbitral institutes and ADR institutes, promote them, and encourage them. Encourage people who are young arbitrators, encourage folks who are mediators to be more mainstream rather than on the sideline, on the fringes and the margins. It's then that you will that will create momentum. So sorry to put you on the spot, Komal. I'm sure Not you knew at all, not at all. It was knowledge for me. that's what I had in mind. Yeah. No, absolutely. Very well answered, Jawad. Very well answered. Thank you so much. Sir, आपको याद है जब हम ICC में थे, seems like a lifetime ago, when we were on the mediation competition. And I remember the story because I have repeated it with such sorrow. At that time, I was less interested in arbitration, तब मैं mediation में interest रखता था, और अभी भी तब भी मेरे mediation की शुरुआत ही थी. और मेरे ख्याल से पहली चीज जो एक गोरे भाईजान ने आके मुझे कही थी, पर खुशी प्यार से अपेरेंटली वो कहने की कोशिश कर रहा था, but didn't come out that way. Aren't you a country that tried to put aside an ICSID, or was it an ICC arbitration, by claiming that your local court, they were talking about RICO, by the way, your local courts had jurisdiction and there was some corruption, something like, I remember, I think it was the Supreme Court, no? So do you guys not know arbitration? मतलब इतना वो प्यार से कह रहा था, इतना वो कोई जालिम किस्म की बात कर रहा था, and that is the fact now. We have absolutely no confidence in the international market as far as arbitration, mediations, or any of these abilities are concerned. So much so that हम लोग, as our own country, we have no faith in our lawyers because we keep sending millions of dollars abroad to UK or US firms to represent us in various arbitrations, whether in ICC, ICSID, and so on. And it's a very unfortunate state of affairs. So I'm sorry, Mac. हमारा अभी दुनिया में कोई खास
سر نے اپنے گورنمنٹ کے حوالے سے تو بتا دیا, مجھے یہ بتا دیں کہ پرائیویٹ پلیٹ فارمس کیا کر سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے. پرائیویٹ پلیٹ فارمس کیا کر سکتی ہیں؟ پرائیویٹ پلیٹ فارمس اچھے آربیٹریٹرز, اچھے لائرز ٹرین کر سکتی ہیں یا ان کو پریپیئر کر سکتی ہیں, اور اگر گورنمنٹ سے اپوائنٹ کرنا ہے تو گورنمنٹ کو سکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں کہ آپ ان کو کر رہے ہیں. بیانڈ دیٹ, private platforms can try to bring in foreign investors. I had a query the other day for someone in Islamabad who wanted me to give them an Islamabad center with their rules for a contract that they want to put in, and I had no one to give them. I had a few names in mind, and then I spoke to them and they were like, हाँ अभी हम लोग जरा सेट कर रहे हैं चीजें, अभी आपको बाद में बताते हैं. तो मैंने उनको कहा कि यार वो सेट कर रहे हैं चीजें, आपको बाद में कभी बताएंगे, अभी के लिए तुम जो कर सकते हो कर लो. So it's a chicken and egg problem. So some people don't think that there's a arbitration institution, so we don't have to send something to Pakistan. People then don't make arbitration institutions because they think no one wants to send things to Pakistan. So unless one happens before the other, and by that I mean arbitration or ADR centers or something else, like you could have something very new. I still believe very strongly now that we're trying to impose very ancient things from the early 1900s or the late 1900s that may have worked for the international market back then, but doesn't necessarily have to work in the current modern market. Jawaza brought artificial intelligence. We are working on virtual reality. There are a lot of new things that you can bring in that can break the mold and just allow people to work with whatever exists. So ضروری نہیں ہے سینٹر کہنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ مطلب انفیکٹ اکریڈیٹیشن کہنا ہے, کچھ اور بھی کہنا, ضروری نہیں ہے آپ نے زوم پہ آن لائن کچھ بھی کرنا ہے. There are a lot of new options that can happen. It's just a matter of listening and then implementing. اچھا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے بار کے اندر آپ اس آئیڈیا کو ذرا کچھ ورک آؤٹ کر سکے کہ بار میں جو ریزسٹنس ہمیں ملتی ہے وہ کچھ کم ہو, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر میں نے بار میں ابھی پچھلے ہفتے جو ہے نا, ہم نے ہائی کورٹ بار میں ایٹ لیسٹ ایک سیمینار کرایا تھا. The bar cabinet, sorry, I'm talking about Lahore by the way, ابھی سندھ کے اوپر مجھے نہیں اتنا پتا. تو وہاں پر کیبنٹ بہت انٹرسٹڈ تھی کیونکہ ایک ہمارے اسپیکر تھے وہ پاور سیکٹر سے تھے. He was the chief legal officer at one of the power plants. So I asked him to come and he told them about the entire power کا structure کیا ہوتا ہے. تو وہ کیبنٹ سے لے کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سب بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں یار یہ کسی نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. اور ہوتا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے the younger lot are very interested in learning, and we can definitely have a lot of sessions at the bar as well. There are certain people that are fixed in their ways, honestly, اور ان کے اوپر ایک انرجی ایکسپینڈ کرنا مجھے نہیں پتا کہ اگر وائز ہے یا نہیں ہے, لیکن آئی ایم ویری شیور دیٹ the younger lot are interested because ان کو ابھی مول توڑنے کا دل کر ہے. ان کو اچھا, اب ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا آپ نے یہ میکینزم بتایا کہ باہر کو اپروچ کر کے تھوڑا سا وہاں پہ جو ریزسٹنس ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جو ہم پبلک ایٹ لارج تک میسج اپنا کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی جو ہمارا لیٹیگنٹ ہے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں کیس داخل کر کے ہی ریزالو ہوگا, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس پبلک کو ہم یہ کیسے بتائیں کہ اس نے جو ایک میکینزم رکھا تھا کہ اپنے بڑوں کے اندر ایک اٹیمپٹ کیا, چلو وہ بڑوں والے اٹیمپٹ سے نہیں ہوا, لیکن اب ایک پروفیشنل بڑا جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے اور تھرو میڈیشن پروسیس کروا سکتا ہے. اس آئیڈیا کو ہم کیسے کروائیں, یہ بھی اسپیس ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں کہ لیٹیگنٹس کے دوران اور یا جو جنرل پبلک میں سوشل میڈیا کے ذریعے کس طریقے سے اپنے پیغام کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ پروفیشنل میڈیٹر لوگوں کے مسئلے کو ریزالو کروا سکتا ہے. کیونکہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے شہروں میں ایسا نہ ہو, لیکن شہر سے ذرا سا ہم تھوڑا سا اگر 100 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ ٹریڈیشنلی اپروچ ضرور لوگ کرتے ہیں کسی نہ کسی اپنے علاقے کے آدمی سے اور ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ریزالو نہیں ہوتا تو پھر دوسری طرف آتے ہیں. تو شہروں میں بھی یہ ٹینڈنسی, اور جہاں شہروں کے علاوہ دوسری وہاں پہ رورل ایریاز کے اندر بھی جو ہے کہ ایک ایکسپرٹ ایسا کر سکتا ہے, یہ میسج کیسے پہنچایا جائے اور اس کے لیے ورک آؤٹ کیسے کیا جائے, بار کیسے کرے, آپ انڈیویجول
جلد کیسے کریں, میڈیشن ایسوسیشن کیسے کریں, سندھ جوڈیشل اکیڈمی, پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کیسے سوچے, کچھ اس پہ ایک تھاٹ پروسیس انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس پہ جوائنٹلی ایک ایفرٹ کی جائے. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شاہد صاحب جو ہے نا وہ یہ نہیں بتا رہے کہ جوڈیشل اکیڈمی نے سندھ کے پہلا قدم تو اٹھا ہی لیا ہے ایشیا فاؤنڈیشن کے تحت, کیونکہ انہوں نے اس کے تحت کیا کیا ہے, وہاں پہنچے ہیں یہ جہاں پر ہمیں بہت پہلے پہنچنا چاہیے تھا, جو ہے سوشل میڈیا. So one of the things that we have done here in Sindh is that if you go to the YouTube channel, there is actually a YouTube channel which tells you how the mediation process is run. How do you make referrals? How do you get benefit from a mediation process? And there are small 3 to 5 minute videos of actual mediations so that the general public is familiar with it. میں انگریزی میں بات کر رہا ہوں مگر وہ تمام ویڈیو ریکارڈنگز میں ساری جو پروسیس ہے وہ اردو میں ہے, اور اس کی وجہ سے آئی تھنک ایک بہت فائدہ ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. آئی تھنک یوٹیوب چینل سے اگر آپ میرا مشورہ چاہیں شاہد صاحب تو وہ یہ ہے, یوٹیوب تو ایک چینل ہوا, آپ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ بھی اکاؤنٹ کھولے جوڈیشل اکیڈمی. جوڈیشل اکیڈمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ صرف یوٹیوب پہ رہے, ٹویٹر پہ آ جائیں, انسٹا پہ چلے جائیں, کیونکہ آج کل ہر آدمی اپنا فون اٹھا کے براؤزنگ کر رہا ہوتا ہے, اور جتنے ہٹس ہوتے ہیں, جس طرح کے یہ الگوریدمز ورک کرتے ہیں, وہ زیادہ اوپر آ جاتا ہے. تو یہ میری تجویز ہے کہ آپ اپنے آپ کو یوٹیوب پہ نہ محدود کیجیے, اور فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹا پہ بھی آ جائیے. بالکل, یہ ہم اپنے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے اجازت لے کر بالکل ایسا, یہ آپ نے اچھا کیا, ہم بالکل میں سر کو بتاؤں گا تو امید ہے کہ اپریشیٹ بھی کریں گے اور ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم اس کو اس تک لے کے جائیں. تھینک یو سر. جواد صاحب, میں آپ کی بات سے بالکل سہمت رکھتی ہوں, بیکاز میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے کومل انور کے نام سے, جہاں پہ میں اکثر آربیٹریشن کی ویڈیوز پوسٹ کرتی ہوں. اور مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ کومل, don't restrict yourself to just YouTube, get on Facebook, get on Instagram, get on Twitter. And آج کل نا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میرے ماشاءاللہ لائک آرگینک 87-88 کے تقریباً سبسکرائبرز بن چکے ہیں, اینڈ بلیو می آئی اونلی پوسٹڈ 3 ویڈیوز, اور مجھے اتنے کویشچنز آتے ہیں آربیٹریشن سے ریلیٹڈ, اینڈ آئی فیل کہ سو الحمدللہ سیٹسفائڈ کہ میری تعلیم جو ہے نا کام آ رہی ہے. یقین کریں, I have a huge burden on my shoulders because after having graduated from a prestigious institution like LSC, and I went on self-finance, my LLB. پھر بعد میں اسکالرشپ ملی, I did LLM and everything. So I had that pressure on my shoulders کہ یار کچھ کرنا ہے ملک کے لیے نا. تو میں کچھ such, I'm earning nothing out of these videos, out of writing a book. I'll be candid over here. I earned 0 penny, on for writing a book, اور ماشاءاللہ اس کی 400 above جو ہے اس کی they were sold. لیکن ماشاءاللہ I'm very thankful to Kamran Nurani sahab, who's the publisher of the book, that he trusted me, or he kind of like thank you so much. I have the book as well in front of me. So thank you, thanks a lot to all of you who encouraged me, and Jawad sahab, you had the most wonderful comments to say. اور میں یقین کریں جب اس طرح کے میں کامنٹس پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تھوڑی سی ایموشنل ہو کے بولوں گی کہ میری مکہ اور مدینہ میں دعائیں قبول ہو, کیونکہ میں نے بچپن سے جو ہے نا, یقین کریں ایموشنل ٹاک امی ابو کو لے کر بڑا, میں نے جو ہے نا لائک ایموشنل ہو کر میں بولوں گی کہ آئی ہیو ورک ڈیم ہارڈ ٹو پروو مائی سیلف. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یار اٹس ٹائم ٹو ریٹرن ٹو pay back to the country who let you have that opportunity to get this scholarship. So that's what I want to do. Komal, I completely agree with you there, and very well done on the book, very well done on all the work that you're doing, mashallah. I'm glad to have connected with you in this forum and so on. شاہد صاحب, آپ کے سوال کا اگر اسے آگے بھی ہم ذرا بات کو لے کر جائیں, ایسے ہے کہ ہم نے کوشش ابھی جو ایک تو جاری کی ہے. What we've done is we've had a selection of people from various industries, various places. And mashallah, ہمارا ایک advisor panel ہے that spans the entirety of
as yet the various industries that exist in Pakistan. Abhi aur bhi aa rahe hain, and they're all giving their little pitches about it. This is how you can come into our industry. This is how you can work with us. This is how it is relevant. This is how it's this and this and that. So it's very encouraging to hear everyone's considerations and importance. आपने भी जो recommend किया है, जवाद ने भी जो कहा है, social media को जरूर use करें. हम लोग personal भी बातें कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है personal से भी काफी फायदा होगा. And whenever and whatever other ways or other avenues exist, we're trying to reach out. We're also making a roster of sorts, and inshallah भी Asia Foundation के साथ भी हम लोग उसके पर काम करेंगे कि जिन ने अगर mediator arbitrator hire करना है तो through our website वो सारे process और portal के through हम पहुंचाएंगे उनके लिए कि ऐसा अपना accept करें, ऐसा अपना सारा इसके ऊपर एक mediator hire कर लें, mediator engage कर लें, calendar कर लें, schedule कर लें, जैसे कोर्ट के रोस्टर या केस मैनेजमेंट होती है वो हम लोग करना शुरू कर रहे हैं. And उसके ऊपर भी हम लोग इंशाल्लाह we would love to work with any and all to make it more prevalent, to bring it to everyone aboard from pretty much any walk of life, honestly. And there are projects that we're doing in other areas as well. Inshallah, we'll do them when Mehak allows, because right now I think she has a question. No, I just wanted to add in because I have been in the academia field for more than 10 years, and we are also planning of launching our diploma in ADR as well. And we have been developing that. So with Judge Shahid Saab and Jawad Saab and Komal, I would like to have a talk after this webinar, and we can sit down or on Zoom and then talk about it. And we also have workshops and a lot of seminars for young graduates and LLB students coming up as well, so they can be more familiarized. Because I teach Punjab University LLB as well, and I teach University of London Kabhi, and they're not concrete modules that are dedicated. University of London does have a module. However, the other ones, local universities generally don't have ADR modules, and therefore it has to be supplemented in order for the lawyers to actually have these skills. That's all I wanted to add. All right. I think we are now going to be taking questions from panelists. Mr. Abdullah Bhatti is asking to please explain the doctrine of severability in arbitration. Okay, so can I just quickly interrupt? Abdullah Bhatti, if you're listening to me, you have been texting me on LinkedIn with the questions, and I have already told you to please have my number. You have majority questions on arbitration. I'll give you a detailed answer, because I understand that the webinar is limited, for there is a time constraint, and it will not be possible the kind of questions you have asked to answer them in detail on this platform. Nonetheless, I encourage anybody to intervene. As far as I am concerned, I'll go on and on and on, and everybody will be like, Komal, can you just stop? So I think this deserves a personal one-to-one call. So how about severability in 30 seconds, Komal? Summarize. Severability is basically, I can answer that in 30 seconds. And it's basically that if there is any clause in the contract which makes the contract invalid, arbitration clause still remains valid, and it would not invalidate the contract. All right. Very precise and short. Thank you. Our next question again is from Abdullah Bhatti, that multinational corporations would rather place their confidence in arbitral proceedings than going to court. Do you agree or disagree with the statement, and also give the reason for your agreement or disagreement? I agree, reason being that arbitration is confidential, and they wouldn't want to destroy their reputation by going to court, and especially if they lose, then it would be quite a bummer. So I'll play the lawyer, and I'll say I'll disagree. Not that I don't agree, but just because I'll play devil's advocate. So I'll disagree because I'll say simply theoretically that while I am guaranteed confidentiality in my arbitration, but the other aspect that I have to keep in mind in Pakistan is that final award will be subject to objections. And in Pakistan, enforcement of an award can be endless and painful. And so
knowing that while on one hand, I will have the advantage of confidentiality in choosing an arbitral forum, on the other hand, I have to weigh in the fact that it's going to take me much longer. So perhaps I might say, well, you know what, confidentiality, all right, I'll sacrifice that, but I'll just go to court because that will maybe get me through that same process of recording evidence, but it will save me from reopening the case. Although you're not supposed to be reopening the case, but then we have reported judgments where one honorable judge of the superior courts decided to enforce the award on reasons that he thought was actually should have been the award based on the evidence gathered. Wow, good for him. So I think we just spoke over one another. I said good for him, and I think Komal said I completely agree. All right. Then moving on to the next question, and this is for people who are, fancy. How can one become members of international arbitration centers? Okay, so I'm part of LCIA and I'm part of CX. You just need to go on to their website and fill out a form, and it's as simple as that. Do you need any degree for it? You need to be an LLB, LLM? So I became the member when I was studying law at LSC. So you don't need to have any degree. You don't need to be a member at all. It's encouraged for young people who want to be part of such forums, which allow you to kind of participate in arbitration through things like ESSO competitions, webinars, and all of those kinds. All right. Thank you so much, Komal. Just to add to that, there is also an organization called the International Bar Association. And every year, the dispute resolution section of the International Bar Association invites students to apply for scholarship to attend the annual conference, which is a conference which has an average of about 6,000 lawyers that come into a particular city. Of course, this is pre-COVID times. And in the past, we've had 4 or 5 Pakistanis who've got scholarships and got to these forums. And the International Bar Association Dispute Resolution Forum is an ideal place to kind of, talk arbitration, mediation, litigation. And there are lawyers from all across the world that are present there. So my advice to students who are listening in is to note down whatever the dates are for submitting their papers for these scholarships and participate in the IBA scholarship program that gives you an opportunity, which is a fully paid opportunity to come in and really attend these seminars by these great speakers, arbitral counsels, and arbitrators. The other thing is for lawyers, again, the International Bar Association, become a member of the International Bar Association. Again, you will then be able to interact on the arbitration and the mediation side. I sort of furthered my interest in mediation by becoming a member of the International Bar Association. That was my first step to gaining international exposure to the world of dispute resolution. And I encourage everyone to do it. And it was for a very small fee. I think it still is a very small fee. It is a fee, unfortunately, of £90. So £90 per annum, it's worth it. And, you can make that investment. The other thing is, that there are different forums, right? They're not necessarily centers, but they're organizations like the CIARB. So on one hand, you can become a member even as a student, but if you're a lawyer and you want to be more recognized and develop your skills, then you can actually increase your status. So you start with an ordinary member, then you become an associate, and then you become a fellow. And the fellow is the highest rank. And by becoming and qualifying in the CIARB world as a fellow, you can then be on their panel. So that's one of the ways to get on to be impaneled. Now, looking at it from a Pakistan perspective, why think international? Under the Securities and Exchange Commission, the Companies Act of 2017, there's actually a panel for arbitrators
and mediators. You know, I was having a conversation with one of the members of the SECP, and I said, you know, I have been impaneled as a mediator for the last 2 years, but I've got nothing out of it. And there is a panel for arbitrators as well. But the point is that there is scope within Pakistan to impanel yourself with SECP. So if there are investor disputes, if there are disputes with the regulator, there is actually a forum available where you can go and play your role as a mediator and arbitrator, but provided you've had that training, which goes back to training, because you can only be playing these roles of arbitrator and mediator if you've had the training. Now, let's say that you haven't had the training. Well, if you haven't had the training, then you can still be part of the arbitration process as a lawyer, as a representative to the party, right? So then you can assist your party in the process because you know and you've studied how it works. And so you can bring value. And by being associated with various organizations, international and domestic wise, you know, look at SICA, look at ADR Institute. You know, I'm associated with an organization called the Pakistan Mediators Association. So even domestically, you know, there are people who are involved in the process, and you can start strong at home. Akbar, you want to add something? No, these two filled it up completely. All right. Thank you so much. Jawad Saab has answered the scholarship question that I'm looking at, and Gulab Nabi Saab, आपका जो question है member के साथ बढ़ना है ADR organization का, वो भी उन्होंने cover कर दिया है. Now we're going to move to our last question of the day, and that is, what are the remedies available if the arbitrator has done misconduct himself or of the proceeding? So the remedies available are that if, of course, the arbitrator has misconducted, then you can challenge the final award. And that again was Abdullah Bhatti Saab, so he has been answered. And that brings an end to our questions and our session. I would like to conclude today's webinar by thanking our experts for their time and having this very important, informative, and engaging discussion on ADR. We had a lot of questions that should tell you that how people were interested. And I would also like to thank all the participants who joined in and made this more enjoyable. Lastly, I would like to thank Asia Foundation and their lead, Mr. Zishan Ali, Ms. Rubina Khatak, and Mr. Abbas Hussain and their team for all their support and help. And thank you so much, Akbar. Thank you so much, Jawad Saab. Thank you so much, Judge Shahid Saab. Thank you so much, Komal. It was a pleasure having you, and this was a very, very good discussion, and I enjoyed myself. Thank you. Very much. Glad to be here. Let's do this again soon. Inshallah. Thank you. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Thank you all the attendees as well. आपने हम लोगों को बहुत सब्र से मैं क्या कहना चाहूँ बर्दाश्त की नहीं कोई बेहतर वर्ड क्या है जो भी गया Suna. Thank you very much. हाँ one of the other words. Thank you everyone. Allah Hafiz. Thank you. Take care, everyone. Bye. Allah Hafiz.